La Torcha, Chile. He has appeared in 2 films, Shadow World and 2 Meetings. And he's been, of course, writing a lot on the Palestine issue. Again, some of us might have read his work. So, Vijay, yeah, thank you. To Beirut, Lebanon, where I visited the southern part of Lebanon, which continues to get bombed by Israel. Israel, in fact, the day that we visited one of the villages in South Lebanon, killed 9 people, 7 of them children, and injured any number of people. Very hard to say how many people were injured. The Lebanese countryside in the south has been almost utterly destroyed. There are villages upon villages which are just ruins, and almost the entire population has become refugees. It's important to understand that Israel has not only been conducting this violence against the Palestinians in Gaza, the genocide, but also has attacked the sovereignty of 7 countries, including Syria, Yemen, Qatar, Lebanon, and so on, without any sanction from anybody. There's a million things I'd like to talk about. I'd like to talk about, for instance, the fact that in 2014, when I was in Gaza right after the bombing, the 2 things that struck me were families talking about the enormous noise of the bombardment, something I'd experienced in Iraq as well. Noise is extremely traumatic. It traumatizes young people for generations. And the second thing is the dust. Modern buildings are built of extremely toxic materials. And when you drop a bomb, which itself is toxic, on top of a modern building, it generates toxic dust that flies around and impacts the pulmonary system of millions of people, and has long-term impacts on people's ability to breathe, to have various respiratory challenges, and so on. I don't want to spend my time talking about that. I want to talk about 2 other things, 2 reports really. One was released by the UN Special Rapporteur on the Palestinian territories. Her name is Francesca Albanese. This is a report called Anatomy of a Genocide, where Francesca looks at the complicity of corporations, Western corporations, in this genocide. A list of very large corporations that have been benefiting directly, financially benefiting from the genocide. At the top of this, again, to repeat, are the telecommunications and internet digital companies such as Amazon, whose web services and cloud services has been used by the Israeli military, in its artificial intelligence use of targeting and so on. Google, whose founding CEO Eric Schmidt has himself written about his close involvement with the U.S. military and with the U.S. surveillance systems. I highly recommend a read of the UN Special Rapporteur Francesca Albanese's report on the anatomy of genocide to show the complicity of large Western companies. But as it happens, there's a new report just out in India. It's called Profit and Genocide, Indian Investments in Israel, written by Hajira Puthige. This is a report produced by the Center for Financial Accountability. Very interesting points made in this report. It's just come out. 5 points for you. Number 1, Indian corporations involved in Israeli military operations. The principal one is Adani Elbit Advanced Systems. They have been involved in producing the Hermes 900 drone. Adani Ports, which acquired Haifa Port, used by Israel for its submarine fleet, but also for its motorboats, which would be going out there to attack the Gaza Samud flotilla. So number 1 is Adani Elbit Systems. Very much should be written about in the Indian media. Secondly, Tata Consultancy Services, Infosys, and Reliance Jio, all providing support for Israel's digital infrastructure used in targeting and for mass surveillance. Part of this Gaza Humanitarian Foundation's killing. What is the hand of Reliance Jio Systems?
What is the hand of Tata Consultancy Service in this? This report begins to show us, to start with asking the initial questions. Journalists should be peppering the Ambani family, the Tata family, asking them, what is your complicity in the genocide? Number three, Jain irrigation involved in the Israeli settlements in the West Bank and Golan Heights in the effective ethnic cleansing of Palestinians from the West Bank. Jain's subsidiary, Nandan Jain, is directly involved in the Israeli project of the extermination of Palestinians in the West Bank. Questions need to be asked of Jain irrigation. Number three, there are a number of Indian companies involved in recruiting Indian construction workers to go to the West Bank to participate in illegal settlements. Got to think about that. I mean, I can go down the list here, but I don't want to waste your time. I want to ask you to go and read this report. I want to ask the Indian media whether it has the courage not only to condemn, Western corporations or to condemn the British government for providing surveillance systems through the Cyprus airport or to condemn Israel itself, but will we ask questions about Indian complicity? Will we ask the Adanis, the Ambanis, the Tatas, their role in the murder, the genocide of hundreds of thousands of people, not only who've been killed, but wounded, traumatized? The largest number of child amputees in the world are now in Gaza. They don't just amputate themselves. They were amputated by weapon systems created by Adani, Ambani, Tata, all Indian companies. Take a look at them. Taking a look at them might make us take a look at ourselves. Thanks a lot. हैं, सुन रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट वगैरह के बारे में, लेकिन भारतीय कंपनियां भी हैं जो पूरी तरह से कॉम्प्लिसिट हैं, जुड़ी हुई हैं जो इजराइल में मैसेकर चल रहा है उसके साथ। तो शुरू करते हुए विजय बोले कि कैसे इजराइल ने सिर्फ गाजा में जेनोसाइड नहीं किया है, 7 देशों की पे उसने हमला किया है और उनकी सॉवरेनिटी पे हमला किया है। लेबनान, कतार और बाकी हम देशों के बारे में पढ़ते रहे हैं बीच बीच में कि किस तरह से वहाँ पे भी बम गिराए गए हैं। और शुरू में विजय बोले कि वो ज़्यादा डिटेल में नहीं बोलना चाह रहे हैं, लेकिन 2014 में जब वो पैलेस्टाइन में थे तो वहाँ पे उन्होंने सुना, किसी ने कहा कि जो बम गिरते हैं और जो होता है इतनी जो आवाज़ होती है वो एक अपने आप में काफ़ी डराने वाली चीज़ होती है। तो आप पे बम नहीं पड़ा है लेकिन आप सुन रहे हैं, वो अपने आप में बहुत ट्रॉमेटिक इवेंट हो सकता है। जो बम गिरने से डस्ट निकलती है वो काफ़ी लोगों को परेशान करती है, वो बहुत ज़्यादा पोल्यूशन क्रिएट करती है उस जगह जो लोग रह रहे होते हैं। और ख़ास तौर से क्योंकि आजकल की जो नई बिल्डिंग्स हैं उनमें जो मटीरियल यूज़ होता है वो काफ़ी ज़्यादा जहरीला होता है और वो लोगों की नाक में जाता है, लंग्स में जाता है, वो उनको किस तरह से परेशान करता है। और उसके बाद विजय ने 2 रिपोर्ट्स के बारे में बात की। एक रिपोर्ट है फ्रांसिस्का एल्बनीज़ी की जो संयुक्त राष्ट्र की स्पेशल रैपोर्टर रह चुकी हैं, और उन्होंने उस रिपोर्ट में बताया है कि किस तरह से माइक्रोसॉफ्ट, ब्लैकस्टोन और भी कई बड़ी बड़ी नामी गिरामी मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, ट्रांसनेशनल कंपनियां हैं जो अपनी सर्विसेज देती हैं इजराइल को, वो जिससे कि वो ये सारा नरसंहार कर सके मास सर्विलेंस के लिए। बड़ी बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनियां हैं, रियल एस्टेट कंपनियां जिन्होंने जाके पूरा जो इजराइल ने अपनी जो एक सेटलर कॉलोनी बनाई है कि फ़िलिस्तीनियों को निकाल के और वहाँ पे घर बना देना, ऑफिसेस बना देना और उसमें इजरायली जाके रहने लगते हैं, वो बनाने में मदद की है। और वो सब जाकर हमको ये भी देखना चाहिए कि इन कंपनियों का क्या रोल है। फिर उन्होंने बताया, लेकिन अभी एक बहुत ही नई बिल्कुल लेटेस्ट रिपोर्ट आई है जो भारत की जो कंपनियां हैं उसके बारे में उस रिपोर्ट में लिखा गया है और काफ़ी चौंका देने वाली और उसमें एक तरह से खुलासे हैं, पूरी रिसर्च रिपोर्ट है और उसमें है कि
एक तो जो इसमें जुड़ी हुई हैं अदानी की कंपनी, मतलब ये कोई सरप्राइज नहीं है, लेकिन किस तरह से अदानी की जो कंपनियां हैं वो इसराइल को सपोर्ट कर रही हैं। ख़ास तौर से अदानी के ड्रोन्स, तो जो जिन ड्रोन से को ले जाके मारा जा रहा है और बम गिराए जा रहे हैं गाज़ा में, वो हैं जो अदानी की कंपनी ने बनाए हैं। अदानी पोर्ट्स, वो जाके जैसे अभी आप लोगों में से बहुत लोग सुन रहे होंगे, समुद्र फ्लोटिला एक चल रहा है कि काफ़ी लोग जाके शिप्स पे जाके कोशिश कर रहे हैं कि गाज़ा तक पहुँचे और वहाँ पे खाना, दवाइयाँ और ये सब कुछ पहुँचाएँ, और उन पे किस तरह से इजराइल अटैक करता है। तो जो अदानी की कंपनी है जो इन्वॉल्व है इस चीज़ में कि वो जाके समुद्र फ्लोटिला नहीं पहुँचे गाज़ा तक, वहाँ के बच्चों को खाना नहीं मिले, वहाँ के बच्चों को एनेस्थीसिया दवाइयाँ नहीं मिले, वो कर रहा है। टाटा, रिलायंस, जैन इरिगेशन, ये सारी ऐसी कंपनियां जो भारत की हैं जिनके बहुत सारे इन्वेस्टमेंट्स हैं इसराइल में। तो उन्होंने आखिर में यही कहा कि हम लोगों का काम है, हम एक तो पढ़ें ये रिपोर्ट खुद, मेरे ख्याल से हम शेयर कर पाएंगे आने वाले दिनों में, मतलब इसके बाद, मीटिंग के बाद, लेकिन हम पूछें खुद अदानी, अंबानी, टाटा, रिलायंस से कि आप ये जो कर रहे हैं ये कैसे कर पा रहे हैं। तो हम उनको की अकाउंटेबिलिटी पे बात करें और हम अपने मीडिया को भी पूछें कि वो ये रिसर्च क्यों नहीं कर रहे, वो ये सारे खुलासे क्यों नहीं कर रहे, या इन्वेस्टिगेट करके और उसके बाद इन सब बड़ी बड़ी कंपनियों से क्यों नहीं पूछ रहे कि आफ्टर ऑल वो कैसे इसमें लगातार मतलब एक इतनी बड़ी रोल प्ले कर सकते हैं जो भी गाज़ा में ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस चल रही है उसके लिए। तो मेरे ख्याल से मोर और लेस विजय ने यही बोला है। थैंक यू विजय। So next I would like to invite Ma'am Radhika Alkazi. Ma'am, she is the founder of Astha, which is an organization which has worked with children with disability in very difficult circumstances, and she has been working in this for 35 years. She also documents the status of children in education through her reports. So next speaker हमारी राधिका अलकाजी हैं, जिनका एक संगठन है आस्था, जो पिछले 3 दशकों से बच्चों के साथ काम कर रहे हैं जिनको डिसेबिलिटी है और जो काफ़ी डिफ़िकल्ट सर्कमस्टेंसेस में रहते हैं, और वो बच्चों का जो स्टेटस होता है